in previous class is the minimum ductility capacity of a system to survive a particular earthquake. So if for a single degree of freedom system with particular damping ratio and natural time period, ductility demand is 3.25 and its ductility capacity is 2.5, that system will collapse during the earthquake. But if the ductility capacity is 4 and the ductility demand is 3.25, that system will be safe during that particular earthquake. Our next topic is effect of natural time period on ductility demand. And for the purpose of illustration, we are considering El Centro ground motion, 5% damping ratio, and we are considering 4 systems. First one with a normalized yield strength of 1, which means that the structure is elastic. Then we have 3 systems with normalized yield strength of 0.5, 0.25 and 0.125, and these are elastoplastic systems. And a graph is developed between natural time period and ductility demand for these 4 systems. The first one is for a system with a normalized yield strength of 1, that is elastic system. The second one is for 0.5, then for 0.25 and finally for 0.125. So one thing which you can observe is if you take 4 different systems, but all of them are 5% damped and have natural time period of 0.5, you can see that with the decrease in normalized yield strength, the ductility demand increases. Ductility demand is 1 for elastic system. It is higher for system with a normalized yield strength of 0.5. When the normalized yield strength is decreased to 0.25, it is increased to 3.11, and when it is further decreased to 0.125, the ductility demand is further increased in 7 to 7.36. Now from these graph we can conclude, first of all, we have, as you know, that there are 3 spectral regions in a response spectra or design spectra. The first one is acceleration sensitive region, the second one is velocity sensitive region, the third one is displacement sensitive region. Now for the purpose of explaining the phenomena, we will strength of 0.5, this second one. ये दूसरा जो ग्राफ है ये हम इसको लेके डिस्कशन करेंगे. एक चीज जो कि आप देख सकते हैं, that in acceleration sensitive region, with the decrease in natural time period, what happens to the ductility demand? इधर बताएं, एक्सेलरेशन सेंसिटिव रीजन में अगर नेचुरल टाइम पीरियड आप कम करते हैं तो डक्टिलिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? नेचुरल टाइम पीरियड के कम होने के साथ डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है. सो इन एक्सेलरेशन सेंसिटिव रीजन, it will not be a good practice
to have a system with a lower normalized yield strength, because if we reduce the normalized yield strength, ductility demand will increase. Then we discuss the system which lies within the velocity sensitive region, which starts from this point and end at this point. Now you can see there is no specific relation between ductility demand and natural time period. You can see here with the increase in the natural time period, ductility demand is increasing. But from this point to this point, with the increase in natural time period, ductility demand is decreasing. Then again increasing, then decreasing. So in velocity sensitive region, there is no specific relation between ductility demand and natural time period. Roughly speaking, you can say that in simple words, there is no relation between ductility demand and natural time period. Now we finally come to the displacement sensitive region, which starts from this point, and you can see that when the natural time period is too high, if you see this region, the natural time period is too high, you can see that the ductility demand here is how much? यहाँ पे आप देखें ductility demand कितनी है? ये 1, 2, 3, 4, 5, ये दूसरे वाले ग्राफ के लिए 2 है और नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ इसकी कितनी है? 0.5 है। अच्छा, अब आप देखें ये 2 जो है, ये नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ का रेसिप्रोकल अगर आप ले तो उससे भी 2 आता है। So you can see that in displacement sensitive region, when the natural time period is too high, ductility demand is equal to reciprocal of normalized yield strength, and reciprocal of normalized yield strength is basically yield strength reduction factor. इसी तरह अगर आप ये तीसरे ग्राफ में देख लें, इस केस में नेचुरल टाइम पीरियड जब बहुत ज्यादा हो तो डक्टिलिटी डिमांड कितनी आ रही है? आप देखें 4 आ रही है, 4, जबकि नॉर्मलाइज यील्ड स्ट्रेंथ का रेसिप्रोकल लें 0.25 का तो वो भी 4 आ रहा है। तो आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दिस रीजन डक्टिलिटी डिमांड is reciprocal of normalized yield strength, and reciprocal of normalized yield strength is yield strength reduction factor. So now coming to the construction of constant ductility response spectrum. In elastic system, we have only one response spectrum for particular damping ratio and particular earthquake regard. But in elastoplastic system, when we can have systems with different ductility capacity, some might have ductility capacity of 2, some might have 4, some might have 3. So we need to develop design spectrum, response spectrum for each ductility capacity. So how we develop this? This is illustrated here. We know that normalized yield strength is Uy by U naught. Uy is equal to U naught into Fy bar. Just like response spectrum or design spectrum for elastic system, we will represent Uy, that is yield displacement, with dy.
So we can rewrite this expression as dy equal to d naught into Fy bar. And if we have the value of dy, that is peak displacement in elastoplastic system, we can find the peak value of pseudo acceleration, pseudo velocity in that elastoplastic system, just multiplying dy with the omega n. And similarly, we can find ay, that is pseudo acceleration in the elastoplastic system by the same relation, that is d into omega n square. However, here the system is elastoplastic system, so instead of d we will use dy. So that is how we can correlate dy with vy and ay. वही इक्वेशंस हैं, लेकिन अब जो है चूंकि इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम है लिहाजा डी के बजाय अब डी वाई आप इस्तेमाल करेंगे और वी वाई और ए वाई। और जिस आपने इलास्टिक सिस्टम में एक रिलेशन डेवलप किया था फॉर बेस शियर कोएफिशिएंट, that was F naught by W is equal to A by G. In case of elastoplastic system, since we have yield force, the force does not exceed yield force, तो आप F naught को Fy से रिप्लेस कर लें और A को Ay से, बाकी वही रिलेशन है। So in this way you can develop ductility response spectrum for various ductility capacities. Here the combined DVA response spectrum for eccentric ground motion with damping ratio 5% are plotted for mu is equal to 1, 1.5, 2, 4 and 8. Okay, now coming to the inelastic pseudo-elastic design spectrum. In previous lecture in module 6, we discussed a procedure for developing a design spectrum. We discussed the procedure for developing the design spectrum as recommended by Newmark and Hall. तो जिसका हमने पिछले लेक्चर में न्यूमार्क एंड हॉल का प्रोसीजर डिस्कस किया था डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करने के लिए, इसी तरह न्यूमार्क एंड हॉल का एक प्रोसीजर जो है वो इनइलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करने के लिए भी है। अब उससे हम इस मेथड के जरिए हम किस्सा इनइलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करेंगे। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम आपको डेवलप करना पड़ेगा। न्यूमार्क एंड हॉल का जो मेथड है डिजाइन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम का, उसके जरिए आपने ये वाला इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करना है, जो कि मॉड्यूल 6 में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इस इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम से हम इन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम किस तरह डेवलप करते हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो ये कि आप जो है इस मेथड में सूडो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम पहले डेवलप करेंगे इलास्टिक सिस्टम के लिए। एक दफा आप सूडो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप कर ले, जो कि मॉड्यूल 6 में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर आप ये करेंगे कि जो v की वैल्यू है इसको ry पे डिवाइड करेंगे। ry क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। और ry जो है
there are three equations for calculating Ry which depends upon the natural time period of the system. For example, when Tn is less than Ta, Ry is taken as 1. When Tn is greater than Tb but less than Tc dash, Ry is taken as under root 2 mu minus 1. But when Tn exceeds Tc, Ry is taken as mu. This is Ta. तो अगर Tn की वैल्यू ये Ta यानी कि 1/33 सेकेंड से कम हो तो Ry आप 1 लेंगे. अगर इससे ज्यादा हो लेकिन ये Tc डैश से कम हो तो फिर आप Ry की वैल्यू अंडर रूट 2 म्यू माइनस 1 लेंगे. और अगर Tn की वैल्यू Tc डैश से ज्यादा है तो Ry की वैल्यू आप 1 म्यू लेंगे. तो आपके पास इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम जो भी आ रहा है उसको Ry पे डिवाइड कर दें, आपके पास ये इन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा. तो ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ड्रा करना. सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि Ry की कौन सी वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम क्या है, तो उसके मुताबिक आप इसमें से डिसाइड करेंगे. अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं. वरना अच्छा जी. So by this procedure we can develop combined DVA design spectrum for different values of ductility capacities. यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड मोशन लिया गया है. सॉरी यहाँ पर न्यूमार्क एंड हॉल मेथड के जरिए जो डिजाइन स्पेक्ट्रम प्लॉट किए गए वो शो किए गए फॉर 5% डैम्पिंग रेशो और पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन ऑफ 1G के लिए. तो पहला जो है ये इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम है जिससे आप मुख्तलिफ डक्टिलिटी कैपेसिटी वाले डिजाइन स्पेक्ट्रम जो है वो डेवलप कर सकते हैं. अच्छा, ये कंबाइंड डीवीए स्पेक्ट्रम है. इसमें से अगर हम AY यानी कि इनइलास्टिक सूडो एक्सेलरेशन डिजाइन स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं लॉग स्केल पर, तो ये वो इस किस्म के आएगा. फर्स्ट वन इज फॉर इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम, देन फॉर डिफरेंट डक्टिलिटी कैपेसिटीज. अच्छा, अब AY हम मालूम किससे करेंगे, तो VY आप सूडो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम एक दफा डेवलप कर ले इस प्रोसीजर से, तो VY और AY को इस इक्वेशन के जरिए रिलेट किया जा सकता है. VY अगर आप मालूम कर लें तो AY उससे आप मालूम कर सकते हैं. यहाँ पर यही ग्राफ है लेकिन लीनियर स्केल पर है. अच्छा, इसके बाद इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन डिजाइन स्पेक्ट्रम या डिस्प्लेसमेंट डिजाइन स्पेक्ट्रम आप प्लॉट कर सकते हैं AY को DY के साथ कोरिलेट कर. On this slide, a relation is developed between UM and AY. UM is the peak displacement in inelastic system. AY is the pseudo acceleration in the inelastic system. And an equation is developed between which correlates UM with AY. So we already know that mu is equal to UM by UY. Ductility capacity is UM by UY, or UM is equal to mu into UY.
and we already know that uy is equal to ay by omega n square. Omega n is 2 pi by Tn. Therefore, we can rewrite the above expression in terms of Tn. ओमेगा n का Tn के साथ जो कोई रिलेशन है वो यूज करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. अब uy की ये वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दें तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा बिटवीन um and ay, which is um is ductility capacity into Tn by 2 pi whole square into pseudo acceleration in the elastoplastic system, which in this case inelastic system, which in this case is elastoplastic system. इसी तरह इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकते हैं और बाज़ औक़ात आप इन ग्राफ इक्वेशन के बजाय इन ग्राफ के जरिए भी um की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ये ग्राफ जो है ये इसी इक्वेशन को प्लॉट के जरिए प्लॉट किए गए और बाज़ औक़ात अगर आप इक्वेशन के बजाय डायरेक्ट यूज इस जो आपके पास ग्राफ आ रहा है इससे वैल्यू मालूम करना चाहें तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं. Anyhow, these graphs are plotted from these equations. For different values of mu, we have different graphs, but you can see all the graphs meet at this point. After this, we have this तमाम जो लाइंस यहाँ पर मीट कर रही है. इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है तमाम वैल्यूज के लिए म्यू की यही ग्राफ आएगा. Tn की वैल्यू जो है वो इतनी हाई हो जाती है कि फिर म्यू की वैल्यू जो भी हो um की वैल्यू पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. Any question? अच्छा जी. Okay, coming to the application of inelastic design spectrum. So there are three applications of inelastic design spectrum. That is, we can use inelastic design spectrum in three different situations. Number one application is structural design for allowable ductility or ductility capacity. That is, we can use the inelastic design spectrum for a structural system whose ductility capacity is known. अगर आपके पास एक स्ट्रक्चरल सिस्टम जिसकी डक्टिलिटी कैपेसिटी नोन हो तो उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए आप इनइलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर सकते हैं. किससे इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to calculate the value of nature time period. जो स्ट्रक्चरल सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप नेचर टाइम पीरियड मालूम करेंगे. नेचर टाइम पीरियड के लिए एम्पिरिकल इक्वेशंस भी हैं और इसके अलावा और मेथड भी हैं जिससे भी आप नेचर टाइम पीरियड मालूम कर लें. उसके बाद फिर आ जाएं आप
और आपका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसकी डक्टिलिटी कैपेसिटी वाला ग्राफ देखिए। फॉर एग्जांपल आपका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसका नेचुरल टाइम पीरियड 1 है और उसकी डक्टिलिटी कैपेसिटी जो है वो 4 है। तो आप इससे कहें कि 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। आपका जो डक्टिलिटी कैपेसिटी है सिस्टम की वो 4 है। 4 वाले ग्राफ को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। आपके पास ए वाई यानी कि सूडो एक्सेलरेशन इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम की वैल्यू आ जाएगी जो कि इस केस में 0.49 जी के बराबर है। एक दफा आप ये मालूम कर लें तो फिर आप उस सिस्टम की यील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में बेस शेयर किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? बेस शेयर और एफ वाई के दरमियान क्या रिलेशन होगा? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में बेस शेयर जो है वो जाहिर एफ वाई के बराबर होगा। तो बेस शेयर एक दफा अगर आप मालूम कर लें फिर आप उसका एनालिसिस और डिजाइन जो है आप कर सकते हैं। तो ये उसकी पहली एप्लीकेशन होगी। इन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट एप्लीकेशन इज structural design for reliable ductility or ductility capacity। अगली एप्लीकेशन पे जाने से पहले हम UM और A के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करते हैं। यहाँ पर हमने UM और AY के दरमियान रिलेशन डेवलप किया था, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम and pseudo acceleration in the elastoplastic system। अब हम UM और A के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करेंगे। A is pseudo acceleration in the corresponding elastic system। तो उसके लिए we know that yield strength reduction factor is F naught by Fy। F naught can be written as A by G into W। Fy can be written as Ay by G into W, and consequently Ry is equal to A by Ay, or Ay is equal to A by Ry। We have already developed this equation, and in this equation if we substitute this value of Ay, we get this equation. Now what we do, we calculate, I think we go to the next topic which explains this statement, which is that what we do, we design a system and find the maximum displacement. Now various seismic guidelines recommend an upper limit of maximum displacement which depends upon the mainly the material and structural detailing. If UM exceeds that limit, we design the revised design, otherwise it is okay. This is further explained in this, that is the second application of inelastic design spectrum. The second application is evaluation of existing structure. First application was design of a new structure for a given ductility capacity. The second application is
evaluation of existing structure. If you have already a structure which is already constructed and you want to check whether it will be safe for the design earthquake or not, in that case, again, the inelastic design spectrum is used, and I will explain the procedure how we can find how we can evaluate existing structure for a design earthquake using inelastic design spectrum. So first of all, uh, what we do, uh, we have a structure whose material properties, geometrical properties are known. In case of reinforced concrete structures, the amount of steel will also be given. With the help of this, we carry out pushover analysis. Pushover analysis basically is a process in which lateral load is applied on the structural system and the lateral load is gradually increased and the corresponding displacements are noted. This is scaled. This feature is available in SAP 2000 or ETABE, and with the help of pushover analysis, we can develop the lateral force displacement curve of an existing structure, which will be somewhat like this. Now, Fy is taken as a yield force at which first plastic hinge develop in the system. And once we find Fy, we can then find Ay by using this relation. Fy हम मालूम कर लें पुशोवर एनालिसिस से, तो हम Ay मालूम कर सकते हैं. Ay एक दफा अगर हम मालूम कर लें तो हम Ry की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और Ry की वैल्यू मालूम करने के बाद हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं उस स्ट्रक्चर में. अब अगर उस स्ट्रक्चर में मिसाल के तौर पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 इंच आ रही है, ठीक, यानी कि जो सीस्मिक डिजाइन स्पेक्ट्रम से जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिकमेंड मालूम कर रहे हैं, यानी डिजाइन अर्थक्वेक के लिए जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर रहे हैं, तो वो ये है कि अगर डिजाइन अर्थक्वेक इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई किया जाए तो इसमें यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 इंच आती है. फिर आप देखेंगे कि जो पुशओवर एनालिसिस है उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है. अगर उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आती है 4 इंच. डिजाइन अर्थक्वेक यानी कि अगर जिस अर्थक्वेक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 इंच प्रोड्यूस होती है और स्ट्रक्चर जो है वो 4 इंच तक डिस्प्लेस हो सकता है. इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है सेफ है. लेकिन अगर डिजाइन अर्थक्वेक की वजह से डिस्प्लेसमेंट 3 इंच आती है और ये स्ट्रक्चर जो है इसमें यूएम 2 इंच आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर 2 इंच पे कोलैप्स हो जाएगा. तो अब आपको इस स्ट्रक्चर की जो है स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, रिट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी और उसको आप फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए रिट्रोफिटिंग के जरिए सेफ बना सकते हैं. तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ the design spectrum.
This is also explained in this example. तो ये एग्जाम्पल आप जरा एक नजर देख लें, इसको सॉल्व करते हैं. So we have a 12-foot high single story reinforced concrete structure which is idealized as an elastoplastic single degree of freedom system. The design guideline recommend that the maximum drift ratio in the structure shall not exceed 2% during design earthquake. I will explain what is drift ratio. Now we have to check whether the displacement in the structural system will be within the safe limit or not when this structure is subjected to a peak ground acceleration of 0.3 g. Elastic stiffness of the story is 250 kip per inch. Weight of the floor is 80 kip. Fy yield strength is equal to 0.2 W and damping ratio is 5%. And we will use elastic design spectrum shown in figure 695 scaled to a PGA of 0.3 G. Now, what is drift ratio? Let me explain. Consider a single degree of freedom system. This is subjected to a force, and due to force, this is displaced by U. If height of the system is h, U by h, that is lateral displacement divided by height, is known as drift ratio. And this is usually represented by delta. So this is a definition of drift ratio. Now, writing the given information, we have a 12-foot high reinforced concrete structure which is idealized as a single degree of freedom system. So height of the system is 12 feet. And the design guidelines recommend that maximum story drift ratio in the structure shall not exceed 2% during the design earthquake. The design guideline, whatever you are using, recommends that this drift ratio for the design earthquake shall not exceed 2%. Now we have to check whether the structural displacement, the displacement in the structural system are within this limit or not. PGA for which we will design is 0.3 G. Weight of the structure is 80 kg. Fy is 0.2 W. (16 kg).
Elastic stiffness of the story is 250 kip per inch. From this, we can find natural time period by using relation इससे आप मालूम करें Tn की वैल्यू क्या आती है। Tn की वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताएं। .18 सर। 0.18 सेकेंड। अच्छा, फिगर 695 पे चले जाए तो फिगर 695 फिगर 6.9.5 ये अनिल के चोपड़ा की जो बुक में जो फिगर है ये वो वाली फिगर है जो कि बेसिकली डिजाइन स्पेक्ट्रम आपको देता है न्यूमार्क एंड हॉल का जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है। इसमें ये पॉइंट जो है टी ए ये वाला टी बी ये टी सी देश। अब आप देखें आपका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो कौन सी रेंज में लाई कर रहा है। वो आप जो नेचुरल टाइम पीरियड है वो टी सी से कम है और टी बी से ज्यादा है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल आप करेंगे। तो जब आप सिस्टम का नेचुरल टाइम पीरियड टी बी से ज्यादा हो और टी सी डे से कम हो तो आर वाई इक्वल टू √2 म्यू माइनस 1 वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे। तो लिहाजा आर वाई जो है आप √2 म्यू माइनस 1 वाली इक्वेशन से मालूम करेंगे। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ना तो म्यू की वैल्यू मालूम है ना आर वाई की वैल्यू मालूम है, ठीक है। लेकिन एफ वाई की वैल्यू आपको मालूम है। एफ वाई जो है वो क्या है, ए वाई डिवाइडेड बाय जी इंटू डब्ल्यू। और एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 0.2W। दिस विल बी इक्वल टू ए वाई इंटू जी बाय ए वाई डब्ल्यू बाई जी। डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा
और ए वाई आपके पास कितना आ जाएगा? ए वाई जो है 2 आ जाएगा। अच्छा, आर वाई जो है yield strength reduction factor, so we have already derived this equation that Ry is equal to A by Ay. Ay आप मालूम कर चुके हैं, A जो है आपने मालूम करना है। तो उसके लिए अगेन आप फिगर 695 पे जाएंगे। फिगर 695 में अगर आप जाएं तो आपका जो नेचुरल टाइम पीरियड है वो 1/8 सेकेंड से ज्यादा है, 0.66 सेकेंड से कम है। तो ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे सूडो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, यानी कि ए जो है किसके बराबर होगा? 2.71 जी के बराबर होगा। ए वाई क्या है? सूडो एक्सेलरेशन इन elastomoplastic system. A is pseudo acceleration in the corresponding elastic system. So pseudo acceleration in corresponding elastic system is 2.71 g. From figure 695. But remember, this is for PGA equal to 1G. आपके केस में PGA जो है वो किसके बराबर है? 0.3G। तो आप इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा? 0.9 जी आ जाएगा। इससे 0.813 नहीं, 0.9 आता है। अच्छा, अब इस इक्वेशन से आप आर वाई मालूम कर लें, yield strength reduction factor। तो दिस इज 0.9 जी डिवाइडेड बाय ए वाई की वैल्यू जो हमने मालूम की थी वो कितनी आ रही थी? 0.2 जी। तो इससे आपके पास 4.5 आ जाएगा। तो आर वाई की कौन सी इक्वेशन इस प्रॉब्लम में वैलिड है? 2 म्यू माइनस 1, या जिससे अगर आप म्यू की वैल्यू मालूम करें तो आएगी आर वाई स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 4.5 स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे म्यू की क्या वैल्यू आती है? सर बताएं कैलकुलेट करके। 10.6 सर। 8.6 10.6 सर। 10.6। अच्छा अच्छा, अब आपके पास इक्वेशन है यू एम इज इक्वल टू, पीछे आपने इक्वेशन डेवलप की है, ये इक्वेशन आपने डेवलप की है। इसमें तमाम वैल्यूज अब हमें मालूम है, ये आप सब्स्टिट्यूट करें। म्यू जो है वो आ रहा है हमारे पास 10.6, आर वाई जो है 4.5, टी एन जो है वो 0.18,
और ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 0.9 जी। ये जरा कैलकुलेट करने से क्या आता है, जी की वैल्यू आप ऐसा करें, ये 32.2 है। अगर 32.2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1.96 फीट। ये दोबारा चेक करें, मुझे कुछ गलत लग रही है। सर 0.056 सर। 0.056 फीट, और इंच में कितना आ जाएगा? सर 0.67। 0.67 इंच। अच्छा, अब इससे आप ड्रिफ्ट कैलकुलेट करें। ड्रिफ्ट रेशियो क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट UM है और हाइट जो है वो 12 फीट है, तो 0.67 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, इससे क्या आता है? सर 0.0046। 0.0046। और इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो है, परसेंटेज में जो है ये वैल्यू 0.46% हो जाएगी। और मैक्सिमम जो रिकमेंडेड ड्रिफ्ट रेशियो कितनी है? 2% है। तो डिजाइन अर्थक्वेक के लिए इसमें जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होगी 0.46% है, विच इज लेस देन मैक्सिमम allowed drift ratio of 2%. So this structure will be safe during design earthquake. During design earthquake. वो भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना एक ब्रेक करते सर हैं। हमने डिजाइन सर 2% के लिए नहीं करनी है। नहीं, 2% जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। जो जिस कोड से आप डिजाइन कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि 2% से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर जो डिजाइन अर्थक्वेक है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो उससे कम आ रही है। तो प्रॉब्लम भी यही था कि आप ये चेक करें कि ये स्ट्रक्चर जो है सेफ होगा या नहीं डिजाइन अर्थक्वेक। प्रॉब्लम अगर है, आप देखें, चेक whether the displacement in structural system will be within safe limit or not when it is subjected to PGA is equal to 0.3 G. तो 0.3 G वाले अर्थक्वेक में इसमें जो ड्रिफ्ट रेशियो प्रोड्यूस होती है 0.46% है, जबकि सीस्मिक गाइडलाइन जो यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट रेशियो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चूंकि ड्रिफ्ट रेशियो 2% से कम है, लिहाजा ये स्ट्रक्चर जो है ये सेफ है। अगर ये सेफ ना होता तो फिर ये है कि अगर स्ट्रक्चर ऑलरेडी, आप ये जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, तो फिर स्ट्रक्चर की आपको रेट्रोफिटिंग करनी होगी और उसको सेफ बनाना होगा। तो
कोई सवाल नहीं है तो 20 मिनट्स का ब्रेक करते हैं, 20 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। In previous session we discussed two applications of inelastic design spectrum, and now we will discuss the third application of the design spectrum, which is direct displacement based seismic design. Since the structural system is a direct measure of damages, therefore a more rational approach is to design the carry out the seismic design based on the displacement. So in this procedure, what we do, in first step, we assume a yield deformation for the system. Uy, displacement at which the system starts yielding. Then maximum, if theta p is the plastic rotation or maximum drift ratio in the system, then maximum displacement um and uy can be correlated from this equation. So once we find uy, theta p, which are given by the seismic guideline which you are using for design, तो जो सा डिजाइन आप गाइडलाइन आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप थीटा पी की वैल्यू वो आपको प्रोवाइड करेगा, वहां से आप ले लेंगे, यू वाई एज्यूम कर लेंगे, इससे यूएम मालूम कर लेंगे। यूएम मालूम करने के बाद आप डक्टिलिटी फैक्टर जो है वो मालूम कर सकते हैं यूएम बाई यू वाई से। एक दफा यूएम बाई यू वाई से आप डक्टिलिटी फैक्टर मालूम कर ले, इसके बाद फिर आप ये करें कि जो स्लाइड नंबर 252 पर जो आपके पास ग्राफ है, जो कि इस इक्वेशन से बेसिकली डिराइव्ड है, तो इसमें आप ये है कि म्यू की वैल्यू आप मालूम कर चुके होंगे, ए वाई की वैल्यू भी आपको मालूम होगी। इससे आप, बल्कि इस ग्राफ से अगर आप डायरेक्ट मालूम कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। यूएम की वैल्यू आपको मालूम होगी, इससे आप टी एन की वैल्यू मालूम कर लेंगे। और टी एन से आप के यानी स्टिफनेस इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। स्टिफनेस मालूम करने के बाद आप यील्ड स्ट्रेंथ एफ वाई जो है वो के इंटू यू वाई से मालूम कर सकते हैं। यू वाई आप ऑलरेडी एज्यूम कर चुके होंगे पहली स्टेप पे, के आप यहाँ पे मालूम कर लेंगे, इससे आप एफ वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। इसके बाद फिर आप स्ट्रक्चरल सिस्टम को डिजाइन करेंगे। अगर स्टील स्ट्रक्चर है तो स्टील स्ट्रक्चर की जो रेलेवेंट कोड है उससे आप डिजाइन करेंगे। कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो नॉर्मली हम ACI कोड इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उससे आप डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ UI मालूम करेंगे। अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ UI स्टेप 1 में जो आप एज्यूम किए उसके बराबर है
तो इट इज ओके, वरना आप ये करेंगे कि सेकंड ट्रायल में स्टेप नंबर 6 से जो यू आई की वैल्यू आएगी वो लेंगे, ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे अनटिल आपकी assumed और एक्चुअल वैल्यू ऑफ यू आई बराबर आ जाए। इस पे एक प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिइंफोर्स कंक्रीट वायरडक्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रीवे, जस्ट लाइक पिशावर में BRT आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये रोड के ऊपर आपका जो है एडिशनल ट्रैफिक फ्लो के लिए ब्रिज डेक होता है। ये ब्रिज डेक जो है ये पियर्स पर सपोर्टेड होता है। पियर्स के दरमियान फिर पर्टिकुलर स्पेसिंग होती है। यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें ये जो पियर है जिसपे ऊपर ये जो ब्रिज डेक जो कि ब्रिज डेक को सपोर्ट कर रहा है, इसकी हाइट 30 फीट है। पियर सर्कुलर है, इसका डायमीटर 60 इंच है और पियर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो है 130 फीट। 130 फीट की स्पेसिंग है। जो वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये जो ब्रिज डेक है वो है 13 के पर फुट। अच्छा, हमने अब ये करना है कि इस पियर को डिजाइन करना है रिइंफोर्स कंक्रीट से जो बना हुआ है बाय डिस्प्लेसमेंट बेस्ड डिजाइन प्रोसीजर फॉर पीक एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 g। और इस मकसद के लिए हम जो इन इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम डेवलप करेंगे तो उसके लिए हम जो इलास्टिक डिजाइन स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेंगे वो न्यूमार्क एंड हॉल वाला जो डिजाइन स्पेक्ट्रम है जो कि फिगर 6.9.5 में गिवन है उसको यूज करेंगे। वो चूंकि 1G के लिए है तो 0.5G PGA के लिए अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो उससे जो वैल्यूज आएगी उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली स्टेप क्या है, UI हम एज्यूम करेंगे। यहां पर हमने ये आप देखें कर्सर को, UI की अब जाहिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है, बस एक वैल्यू एज्यूम कर ले। 1.8 इंच एज्यूम की है यहाँ पर। अच्छा, अब ACI कोड यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं जो कि रिइंफोर्स कंक्रीट कॉलम्स के लिए थीटा पी की 0.02 रेडियन, ये सारी ड्रिफ्ट रेशियो नहीं है, रोटेशन है। रोटेशन एट द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, ये 0.02 रेडियन रिकमेंड करता है। UI आपने एज्यूम की है, थीटा पी की वैल्यू जो ACI कोड है वो आपको दे रहा है। आप इससे UM मालूम कर सकते हैं। हाइट ऑफ द पियर 30 फीट है, UI 1.2 इंच एज्यूम की है, थीटा पी 0.02, तो 30 फीट को इंच में कन्वर्ट कर दें तो UM की वैल्यू 9 इंच आ जाएगी। अब UM की वैल्यू आपके पास आ गई है, UI आपने एज्यूम की है, इससे डक्टिलिटी फैक्टर आप मालूम कर सकते हैं जो कि 5 आ रही है। और अब आप ये करेंगे कि फिगर जो स्लाइड नंबर 2 पर जो फिगर है उस पर आप जाए तो मीन इज इक्वल टू 5 वाला ग्राफ ले। UM की वैल्यू 9 इंच है, इससे आप TN की वैल्यू मालूम करें जो कि इस केस में आपके पास आ रही है 1.024 इंच। तो स्टिफनेस अगर आपको मालूम हो, नेचुरल टाइम पीरियड अगर मालूम हो तो स्टिफनेस आप मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से। M जो है वेट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टोटल वेट आप को गिवन है, इसको G पे डिवाइड कर दें, मास आ जाएगा।
और इससे आप स्टिफनेस मालूम कर लेंगे। स्टिफनेस इस केस में 164.9 kPa इंच आ रही है। अब इसको आप UY से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यील्ड फोर्स आ जाएगी विच इज 296.9 kPa। अब इस फोर्स के लिए अब आप इस ब्रिज पियर को डिजाइन करेंगे। यहां पर चूंकि अभी ये कोर्स इनफोर्स कंक्रीट डिजाइन का नहीं है तो वो हम डिजाइन प्रोसीजर स्किप कर रहे हैं। एनी हाउ जो FY है FY अगर एक सिस्टम के टॉप एंड पर एक्ट कर रहा हो तो उस मोमेंट कितनी होगी, मोमेंट जो है वो FY मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी। तो FY आप मालूम कर ले फोर्स, मोमेंट मालूम कर लें, एक्सियल फोर्स जो है वो आप जो टोटल वेट वो सपोर्ट कर रहे उसे मालूम कर ले, और इंटरेक्शन डायग्राम के जरिए आप इन्फोर्समेंट मालूम कर लें। इस केस में इन्फोर्समेंट रेशियो जो है 3.6% आ रही है। अच्छा, इन्फोर्समेंट रेशियो जब आपके पास आ जाए तो आप करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं, उससे आप EI की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और EY की वैल्यू मालूम करने के बाद आप K की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं इजीली। किससे मालूम करेंगे, उसके लिए आप EI की वैल्यू आप मालूम कर ले। I जो है करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, E जो है 57 कंक्रीट के लिए 57,000 अंडर रूट FC प्राइम के बराबर। अच्छा, स्टिफनेस जो है कैंटिलीवर कॉलम के लिए स्टिफनेस किसके बराबर होता है, थ्री EI ओवर HQ। E की वैल्यू आप यहां से मालूम कर लेंगे, I की वैल्यू करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मालूम कर लेंगे, हाइट आपको मालूम है, स्टिफनेस आप मालूम कर लेंगे इससे। स्टिफनेस मालूम करने के बाद आप यील्ड स्ट्रेंथ को स्टिफनेस पर डिवाइड कर दें तो UY की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3.31 इंच आ रही, जबकि एज्यूम हमने जो की थी वो कितनी थी, 1.8 इंच। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू एज्यूम्ड वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम दूसरा ट्रायल करेंगे। यहां पर पहले ट्रायल की जो समरी है वो शो की गई। दूसरे ट्रायल में हम जो पहले ट्रायल के एंड पर जो K की वैल्यू आ रही है उसको लेते हुए ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे, और ये तमाम प्रोसीजर रिपीट करने के बाद हमारे पास UY की वैल्यू आ रही 3.19 which is again different than the assumed value of 3.31 inch। तो तीसरे ट्रायल में आप ये वैल्यू ले लें 3.19, और तीसरे ट्रायल में एट द एंड ऑफ थर्ड ट्रायल हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 3.18 इंच विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द assumed वैल्यू। तो ये तीसरा ट्रायल भी काफी है, चौथा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल और assumed वैल्यू बराबर आ रही है। तो लिहाजा इस केस में जो स्टील रेशो आएगी
वो आप डिजाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बेस्ड डिजाइन। हमारा लेक्चर जो है वो मॉड्यूल 7 वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई सवाल आपका है तो वो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपका मैं एक तो और असाइनमेंट भी आपको दूंगा। मॉड्यूल 6 और 7 में आपका क्विज होगा नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक हम मॉड्यूल 8 बी स्टार्ट करेंगे और उससे अगले वीक में इंशाल्लाह हमारा कोर्स है वो खत्म हो जाएगा।